Hi, good evening, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we are going to start with the first algorithm designing technique, that is divide and conquer. So this weekend, we had covered the various methods of solving the recurrence relation. So on Saturday, we covered how to solve a recurrence relation with substitution method, and then in yesterday's session, we talked about Master's theorem, extended Master's theorem, and recursive tree method. और end पे मैंने summarize करके आपको बताया था कौन से सिनेरियो के अंडर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे टू सॉल्व अ रेफरेंस रिलेशन. Okay, so this means that we are good to go with the algorithm designing technique क्योंकि अब तक हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, असिम्प्टोटिक नोटेशन और कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस कर चुके हैं, रेफरेंस रिलेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं. वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दैट. सो फर्स्ट algorithm designing technique is divide and conquer. Name itself suggests that divide, the very first step is to divide the large problem into a sub problem. तो आपको कोई large problem given है, so it's kind of complex to find a solution for a large problem. तो हम क्या करते हैं, अगर कोई बड़ा task होता है, we divide that into small parts and we work on the small task. जैसे ही आपके पास सारे सब टास्क का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, तो हम सारे सॉल्यूशंस को कंबाइन कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम. सो दिस इज व्हाट डिवाइड एंड कॉन्कर इज सेइंग, दैट वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू द सब प्रॉब्लम. अब कब तक डिवाइड करते रहेंगे? दिस मीन्स जब तक हमें टर्मिनेशन कंडीशन नहीं मिल जाती. Okay, so we'll be solving a function in terms of itself, क्योंकि अगर आपको original problem given है कि you have to solve, you have to sort n elements, आपको n elements को sort करना है, तो इसका मतलब जो sub task है उस में भी we have to apply the sort function. So this indicates that somewhere divide and conquer is using the concept of the recursion, right? Because whatever task we have to perform on the problem itself, the same task, the same function will be applying on the sub problems. And in the term, in a recursive statement or in a recursion, we have to determine the termination condition की problem को हम divide कर तो रहे हैं, but कब तक divide करना है? तो answer is until it reaches to a smaller problem. So first of all, divide and conquer is a top-down technique for designing algorithms. Algorithms को design करने के लिए we follow a top-down approach. Why is this known as top-down approach? So if you are given with some problem and you have to apply that function on n elements and n is large, if n is large, that means the number of elements in a problem are large, then we'll be dividing this problem into the sub-problems. We'll be dividing this problem into sub-problems. Let's say that k sub-problems are there. This is n1, n2 and so on up to nk. Further, we'll be dividing it. कितनी parts में divide करना है ये depend करेगा आपकी problem के ऊपर. And further we'll keep on dividing this into the sub problems. कब तक divide करेंगे? Until it reaches, until here we get a termination condition. Last level means leaf level पे we will be getting a termination condition. If I'm applying some function f of n on the original problems, function जो हम apply कर रहे हैं that is f. Those same function will be applying on the sub problems as well. Same function will be applied. और जब same function आता है तो इसको हम बोलते हैं recursion. So this clearly indicates that the concept of divide and conquer is based on the recursion. और जहाँ पे भी recursion आएगी, we can write the recurrence relation. And if we are able to write the recurrence relation, then easily by solving that recurrence relation, we can return the time complexity. Make sense? ये क्लियर है? तो यहाँ पे मेजर फेसेस के द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड द लार्ज प्रॉब्लम. Divide and conquer paradigm consists of the major phases. The very first step is to break the problem into the sub problems that are similar to the original problem, but अब जब आपने divide कर दिया तो obviously it's small, size is small. After that we will be finding out the solution of the sub problem. So solve the sub
problems recursively. Ricursively क्यों बोले? क्योंकि हम same function apply कर रहे हैं. So the very first step is known as, this is known as divide. Conquer means to combine, conquer means to find out the solutions of the sub problem. जब सब problem के solutions आ गए, then we will be combining the solutions of the sub problems to get the solution of the original problem. For example, this was divided here. If I got the solution for this problem and this problem, I'll merge them up. Earlier we have came like this. We found the solutions of the sub problem. अब उसके बाद solutions को merge करेंगे to get the solution of the original problem. So ultimately we'll end up with the solution of the original problem. So third step में we are just combining the solutions of the sub problems to create a solution of the original problem. So this step is known as combine. Anyone having any doubt till this point? I guess it's clear, right? This is combine. Now there are multiple applications available for divide and conquer, जिनके basis पे straightforward question भी आ सकता है और application based question भी आ सकता है, और on the basis of complexity they can form a question. So we will be talking about 7 applications under divide and conquer: power of an element, binary search, quick sort, selection procedure, finding the maximum element and minimum element, merge sort, and stress matrix multiplication. Obviously all these applications will not be covering in today's session itself. We will be covering these applications like in 3 sessions. तो पहले session में, आज वाले session में will be just understanding the basics of divide and conquer. So in today's session we will be covering power of an element, binary search, and finding the maximum and minimum element. So these 3 applications will be covered. Okay. All right. So guys, just give me the confirmation if you have joined this Telegram group, क्योंकि इस Telegram group में जो हर सेशन से रिलेटेड पीडीएफ होती है, चाहे वो इसरो का सेशन है या गेट का है, मैं एक ही ग्रुप में पोस्ट कर रही हूँ इसरो और गेट वाली पीडीएफ, क्योंकि इसरो वालों को भी गेट के कॉन्सेप्ट्स चाहिए एंड जो गेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी इसरो का जो पेपर है, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो syllabus में है, तो they can practice those questions as well. So that's why I'm sharing the PDF from YouTube channel and Gate channel in the same Telegram group. So you can download these PDFs from the Telegram group. आज वाला session खत्म होगा, उसके 10-15 मिनट में आपको PDF Telegram group में reflect होनी शुरू हो जाएगी. And अगर आपको कोई भी doubt आता है, if any doubt or प्रॉब्लम इज देयर, यू कैन पोस्ट दैट इन द ग्रुप. तो आप वहां पे बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट कर सकते हो, और इफ एनी डिस्कशन इज गोइंग ऑन यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट. You can directly interact with me. Quiz and polls will also be conducted in that group so that you can actively participate and you can keep track of your preparation. Okay? और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि गलत हो गया, आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए था एंड व्हाटएवर एक्चुअल आंसर इज गिवन इट्स नॉट मैचिंग, और यू थिंक लाइक कि नहीं आपका आंसर करेक्ट है, तो यू कैन डिस्कस इट विद मी. ओके. All right, so let's start with the first application, that is divide power of an element. This is the first application of power of an element. So here we have power of an element means, like I want to find out the power as 2 raised to power 4. 2 raised to power 4 का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं. 2 raised to power 8. So I can write this 2 raised to power 8 as 2 raised to power 4 into 2 raised to power 4. If I have solved this value for one time, I need not to calculate it again. क्योंकि अगर आपके पास 2 raised to power 4 का आंसर आ चुके हैं, दोबारा नहीं फाइंड करेंगे. So I'll be just expanding this. This is 2 raised to power 2 and 2 raised to power 2. अब आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं. We cannot determine the termination condition here. This is 2 raised to power 1, 2 raised to power 1. So I'll be just expanding one half of the problem. That means if we are given with a, this is a raised to power n. अगर मुझे a raised to power n फाइंड करना है, 2 raised to power 8 फाइंड करना है, तो बेसिकली हम इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे? दिस विल बी a raised to power n by 2. This is also a raised to power n by 2.
a raised to power 4 की वैल्यू 2 raised to power 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. So this comes out to be a n, again will be taking the half of the original power. So this will be n by 4, a n by 4. I'll not be working on this part क्योंकि अगर एक बार वैल्यू अवेलेबल है तो सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई इट. I'll be expanding it further. कब तक expand करेंगे? You can also write this as 2 raised to power 2 n a n divided by 2 cube. This way there might be k levels, n divided by 2 raised to power k, right? And finally we'll stop when here we are getting 1. That means n divided by 2 raised to power k की value जब 1 होगी तब हम बोलेंगे this is a termination condition, because we know that अगर किसी भी number की power 1 है then it will be returning the answer as 1. Here we are constructing a tree, recursive tree, same function apply हो रहा है, तो we have to determine the termination condition. Can you tell me that what will be the termination condition here? I have already given you a hint. Termination condition. अगर n की value 1 है, if n is equal to 1, then what will be returning? I want to find out t of n. यानी कि a की power n find करनी है. क्या return करेंगे? कोई response ही नहीं आज. What should I return here? Anything raised to power n, what will be that? 2 की power 1 है, answer will be 2. 3 की power 1 है, answer will be 3. 4 की power n है, answer will be 4. 5 की power n है, answer will be 5. So this means that if I'm finding a raised to power n, if I'm finding a raised to power n, तो ये क्या return करेगा? It will be returning a. Right? अगर n is 1, then it will be returning a. अगर n की value 0 है, if n is equal to 0, let me write return. अगर n की value 0 है, anything raised to power 0 is 1. So a raised to power n will be returning 1. So basically what I'm writing is, if I'm writing a function, मुझे power find करनी है किसकी power? A raised to power n. तो यहाँ पे हम termination condition दे रहे हैं, if n is equal to 0, then return 1. If n is equal to 1, अगर n की value 1 है, then it will be returning a, right? Else means termination condition match nahi hui, power is greater than 1. So what should we write here? What should I write here? अगर n की power greater है तो हमें problem को divide करना है. किसके basis पे? On the basis of the mid. We will be dividing this on the basis of, is it okay? We'll be dividing this on the basis of mid. So m will be equal to, और mid will be equal to n by 2. अगर original power n थी तो हमने इसको divide कर दिया n by 2 के basis पे, and I'm finding the power for, you have divided the problem into 2 parts, then I'm applying the same function on this sub problem, that is power of a n by 2 is something that we are calculating. जैसे ही आपको इसका आंसर मिलेगा उसके बाद हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, f is equal to f into f, और finally will be returning the value. Correct? ये तो हमने प्रोग्राम लिखा. So now if on the basis of this I want to write a recurrence relation, what will be that? और अगर हम इसका analysis करते हैं, let's do the analysis for this code. We know that how to do the analysis. So this is a termination condition. Let's try to write a recurrence relation. So T of n is equal to, if n is equal to 0 or n is equal to 1, then it is going to take constant time क्योंकि directly value return कर रहे हैं. Correct? Second one is, if n is greater than 1, then we need to divide the problem. So dividing a problem in
or finding the mid, that will be taking constant time क्योंकि loop नहीं आ रही है, एक ही बार execute होगी ये statement. And what about this one? If here we were applying the function on power n, तो यहाँ पे हम same function apply कर रहे हैं on n by 2. If applying the function on n, then we'll be applying the same function on n by 2. Are you getting how I'm writing the recurrence relation? ये वाली application बहुत simple है, हो सकता है इसके basis पे कभी भी question आए, but at least you'll learn that how to write a recurrence relation if you know the concept. So it's n by 2 because it's making the same function call on n by 2 elements. उसके बाद हम एक multiplication perform करवा रहे हैं. Performing any arithmetic operation will be taking constant time. This will also be taking constant time. So ultimately this comes out to be plus constant. Can you tell me that what will be the time complexity for this one? हमारे पास एक recurrence relation आ गया. We have got one recurrence relation here. It is saying that T of n is equal to T n by 2 plus C. What will be the time complexity? Or let me know which method will you be applying. इस recurrence relation को solve करने के लिए आप कौन सा method use करोगे? We can use any method. We can use substitution method. We can use Master's theorem. So anyhow, with the Master's theorem here, A is 1, B is 2. When you'll be finding n raised to power log A with the base B, this comes out to be n raised to power 0, which is constant. तो ये match हो गया. तो इसका मतलब in order to break the tie, we have to take log n. F of n is constant, and log n, that is log n only. So this is the time complexity for power of an element. I don't want you to understand ये नहीं बताना है मुझे आपको कि power of an element कैसे find करते हैं. I just want to discuss that using divide and conquer, how can you find out power of an element? This is using divide and conquer. इसके अलावा एक और approach होती है, that is known as the brute force method, यानी कि हम जिसमें कोई method use नहीं कर रहे, कोई technique use नहीं कर रहे, we are simply using a for loop to find the power of an element. Yes? Make sense? I'm not getting why you guys are not responding. So let's quickly discuss what are the different methods of finding the power of an element. So using finding power of an element using brute force method. Brute force method means without divide and conquer, and second one is using divide and conquer. Simply without divide and conquer में will be using one for loop. For example, मुझे 2 raised to power 4 find करना है, तो initially P is equal to 1, that means जो result आ रहा है that is equal to 1. In this case, A is 2 and N is 4. P is equal to 1, that is initialized, and I आपने declare किया but अभी initialize नहीं किया. I की value 1 आई, 1 is less than N, यहाँ पे N की value 1 है, N की value 4 है, 1 is less than 4, yes, condition is true, then it will be returning P into, P की value is 1, P into A is 2, that is returning 2. Next case में again will be repeating this, P is equal to 2, जो previous value है P की, P into 2, that is 4. This is when I is equal to 1. This is when I is equal to 2. I की value 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी? It is going till n. And here we are assuming that n is equal to 4. So P is equal to 4 into 2. That is equal to 8. P is equal to 8 into 2. That is equal to 16. Now I will be incremented to 5. 5 is less than equal to 4. No, we'll stop here. So finally, we are returning the value of P, and that is nothing but that is returning the power of the element. Okay. So यहाँ पे we are just using, if we do the analysis to return the time complexity, first statement will be taking constant time. Second statement
is under the control of the for loop. Now we need to determine that simple concept है, nested for loop भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है. So it's just the for loop. We have discussed this under the analysis of the algorithm. If I is going from 1 to n, सिर्फ इसके बेसिस पे कॉम्प्लेक्सिटी रिटर्न नहीं करनी, चेक करो कि वैल्यू मॉडिफाई कैसे हो रही है. How this value gets modified? This is modified by considering the next value. पहले I की value 1i, then 2, then 3, then 4, and so on. This way it will be going till n. So this means that this step will be repeated for n times. This statement will be repeated for n times. This was repeated. This will be executing for one time only. This statement executes for n times. Return p, this will be executing for one time. If we return the time complexity क्या आएगी? Here maximum value is 1, n or 1. It's obviously n, so complexity comes out to be order of n. This is without divide and conquer. Now let's go with divide and conquer. अभी हमने approach discuss किए तो divide and conquer में 3 steps हम follow कर रहे हैं. First one is divide the problem into the sub problems, then finding the solutions of the sub problems, conquer, and after that we are returning or we are combining the solutions in order to return it to the original problem. So since this is a recursion with DAC means we are talking about the recursion. So recursion means we need to determine the termination condition and a recursive statement. So termination condition here is if n is equal to 1, then it will be returning a only. If you want to include here, it is not going to handle the case of 0. So you can include here if n is equal to 0, then it will be returning 1. It will be great if you can include this. So anyhow, this will be taking constant time. क्योंकि directly कुछ ना कुछ answer return कर रहे हैं, so this will take constant time. Else, here it's making a call to the same function. If this is t of n, already हम इसको वैसे solve कर चुके हैं. So this is taking n by 2 elements, t of n by 2, and this will be finding the multiplication will be taking constant time. This will also be taking constant time. So with DAC, we are getting the time complexity as theta of log base 2n. Which one is smaller? Obviously, logarithmic time complexity is smaller than the linear one. So without DAC is taking more time. Better solution is with DAC. Okay, so this is about power of an element. Just let me know if you are comfortable, if you have understood that how to write a recurrence relation. I'll not be focusing on solving the recurrence relation. आप substitution method से भी इसको solve कर सकते थे और मैंने ये same example लिया भी है. So I'm just asking that now are you comfortable that how we are writing the recurrence relation? Hurry up, quickly give me the confirmation if it's clear. Come on, guys. ओके यहाँ पे हमने जो पावर ली है दैट इज द इवन पावर. तो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो दोनों साइड पे इक्वल पावर आ रही है. व्हाट इफ वी आर हैविंग अ पावर दैट इज समथिंग लाइक ऑड वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 5 कैलकुलेट करने, तो आई कैन नॉट रिटर्न कि एक साइड पे 2 रेज़ टू पावर 2 कर लो, एंड क्योंकि यहाँ पे हम लोग p इंटू पी कर रहे हैं. सो बेटर आइडिया इज अगर पावर ऑड है, फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू पावर 5 कैलकुलेट करना है, आई कैन राइट दिस एज 2 रेज़ टू पावर 4 into 2. So what I'll be doing is I'll be subtracting 1 from the power, and after that I'll be following the same procedure to calculate the value of 2 raised to power 4. End पे जब आप value result return करोगे, instead of returning p, here will be returning p into a. क्योंकि आपने यहाँ पे पावर एक subtract की है, तो this means we have to multiply this a for one time when returning the final answer. Correct? Is this clear? So this is how you can handle the odd power.
Next one is binary search. तो जब हम सर्चिंग की बात करते हैं, यूजली वी कम अक्रॉस टू टर्म्स, वन इज नोन एज द लीनियर सर्च एंड अदर वन इज नोन एज द बाइनरी सर्च. Linear search and binary search. Linear search simply says that we have to check for the element. Search means किसी element को ढूंढना, राइट. सर्चिंग और सॉर्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है. कुछ लोग दोनों टर्म्स को एक साथ यूज करते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. सर्चिंग मीन्स दैट यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग. किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, किसी पर्टिकुलर चीज को आप ढूंढ रहे हो. सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और इन एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस. आप किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में चीजों को सॉर्ट कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, राइट. सो सॉर्टिंग इज बेसिकली कमिंग अप in context to arranging the elements in some pattern. Arranging the elements in some pattern or format. Pattern ये कुछ भी हो सकते हैं. So that is sorting. Searching. Now in this application, we will be just focusing on searching. Once we are done with the applications of divide and conquer, then we'll be talking about the sorting technique. आपने देखा होगा जो मैंने searching divide and conquer की applications लिखी थी, उसमें दो sorting techniques भी आती हैं. One is the merge sort and the quick sort. So these two sorting techniques, particularly the merge sort and the quick sort, make use of divide and conquer to sort the elements. ओके. लीनियर सर्च मीन्स जब आप एलिमेंट को देख रहे हो वन आफ्टर द अनदर. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नोट्स देख रहे हो, आपने उनको प्रॉपरली सॉर्ट नहीं किया हुआ, तो पेज नंबर नहीं है, कौन सा टॉपिक अल्फाबेटिकली भी सॉर्टेड नहीं है, पेज नंबर के बेसिस पे भी सॉर्टेड नहीं है. सो यू नीड टू लुक एट ईच एंड एवरी पेज ऑफ योर नोट्स वन आफ्टर द अनदर. हर एक पेज पे आप एक के बाद एक देखोगे. पहला पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज. That is known as linear search. Binary search is जब आपकी बुक sorted है on the basis of the page number or on the basis of topic, या डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज्ड है ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. बुक यूजली टॉपिक के बेसिस पे सॉर्टेड नहीं होती है, बट इट्स सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पेज नंबर. तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट पेज नंबर मालूम है, हमें पेज नंबर 1000 मालूम है, दिस इज द लास्ट पेज नंबर. विद जनरल फॉर्मेट में विल बी सेइंग फर्स्ट पेज नंबर एंड nth पेज नंबर. तो हम लोग मिड में से यूजली फाइंड करते हैं. वी रेंडमली ओपन द बुक. सो आई एम एज्यूमिंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ मिड वी आर डूइंग दैट. और मुझे पेज नंबर चाहिए 1 2 3. So I'll check if the required element is x. Required element is x. जो मिडल पे पेज नंबर आपके सामने ओपन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 500, तो सबसे पहले हम मैच करेंगे क्या ये मिड के साथ मैच हो रहे. इट्स नॉट मैचिंग बिकॉज मिडल पे आपके पास पेज नंबर 500 है एंड वी वांट 1 2 3. सो आफ्टर दिस विल बी जस्ट कंसिडरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक. हम सेकेंड हाफ में देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ये 1 2 3 है, सिंस दिस इज स्मॉलर देन द मिडल एलिमेंट, x is smaller than middle element, then we'll be just considering first half of the problem. First half means starting from page number 1 to अब यहाँ पे last page number होगा 499, right? So again we'll be applying the same process. We'll get the mid here. फिर comparison करेंगे, is it matching with the required element? If yes, then it's fine. Otherwise, go to either left side. अगर required element smaller है, if required element is smaller then middle element, तो कौन सी साइड पे जाएंगे, then we'll be going to the left side because smaller elements are present on the left hand side. Go to left hand side. If required element is greater, then middle element
Then we'll be going to go to right hand side. Yes, that means we will be just exploring either first half of the book or second half of the book. Either the elements which are present on the left hand side or right hand side, दोनों consider नहीं करेंगे. ये half of the elements को हम कब discard कर सकते हैं? Problem को अगर total 1000 pages थे, second step पे आपके पास 500 रह जाएंगे. Third step पे you will be having 250 pages. Like that, every time we are discarding half of the elements. This is possible only in case of binary search और binary search का but एक constraint है. This is applicable only if the elements are sorted. जबकि हम linear search apply कर सकते हैं for sorted or unsorted elements, but definitely the time complexity taken by the linear search is more, so we don't apply it for sorted elements. अगर elements sorted है, by default will go for the binary search. So let's talk about these approaches one by one. Linear search. Linear search means आपके पास elements given है starting from 1 to n. N elements are given और आपको एक एक करके सारे elements check करने starting from the first element. So for I is equal to 1, कहाँ तक जाएगी ये condition? N तक I plus plus. If A of I means you are searching for some element in the array. This is representing that array name is A is representing the array name. N is representing the number of elements in the array, number of elements in an array. X is representing the required element. जिस element को आप ढूंढ रहे हो, that is X. So we'll start comparing it with each element of the array. सबसे पहले first element के साथ check करवाए. एक array consider कर लेते. Let's assume that this is unsorted. I'm taking this as 10, 20, 30. 1, 2, 3. This is unsorted array. I'm looking for the element that is equal to 10. तो मैंने first element के साथ compare करवाया and it is matching with the required element. So I'll return the position. ये element कहाँ पे available है? Let's assume that index of the array starts from 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the required element is available at the index 1. So I'll be returning the position of the element. Right? Now, in this case, this is behaving like the best case. Best case means आपने पहला ही element देखा और by chance वही match हो गया. So best case में time complexity क्या है? Best case time complexity is returned by omega. So here this is returning omega of 1, constant time. But if I'm looking for the element x is equal to 3, worst case में क्या होगा? I'll compare it with the first element. कहाँ से loop start हो रही है? From the first element. First element is equal to 3? No. Second element is equal to 3? No. Third element is equal to 3? No. Fourth element is equal to 3? No. Fifth element not matching. Sixth element is matching. This means that last element is the required element. तो worst case में क्या हुआ? Worst case means बिल्कुल end पे required element पड़ा हुआ है. So in this case, this for loop has executed completely. So we can say that the worst case time complexity is order of n. Can you tell me that what will be the average case time complexity? Average means element is somewhere present in the mid, right? Mid means kind of n by 2. n by 2 times आपने loop execute किए. n by 2 is nothing but that is also represented by theta of n. This is the case when we will be getting the element. जो search है वो आपके पास successful भी हो सकती है, unsuccessful search भी हो सकती है. Search can be successful search or it can be unsuccessful search. Successful search means जो element आप ढूंढ रहे हो वो आपको array में मिल गया. Okay, unsuccessful search means we are looking for the element which is not present in the array. Required element is present
in the array. Unsuccessful search means a required element is not present in the array. So what we need to do here is, for successful search, अगर element present है तो उसकी different positions हो सकते हैं. Element is present at the first position, element is available at the last position, element is available somewhere in the mid. So this is about successful search. जब आपको element मिल रहे हैं. Can somebody tell me that what will be the time complexities under unsuccessful search? Best case, worst case, average case? अगर हम best case की भी बात करते हैं under unsuccessful search. Unsuccessful means I'm looking for the element, for example, 40. Best case में क्या होगा? First element not matching, second element not matching. जब तक element नहीं मिलता तब तक we will be moving in the forward direction. So first element not matching, second not matching, third not matching, fourth not matching. So best case, worst case, average case, सब में इसने पूरे array को explore किया. It has looked till the last element, but it has not found the required element. So that is a case of unsuccessful search. So here we'll say that worst case complexity is n, best case complexity is n, and average case complexity is also n. I need not to write the words best case, worst case, and average case. Just by looking at the asymptotic notation, you can identify that which case we are considering. Correct? This is about linear search. हमने problem को divide नहीं किए, so this is also known as without DAC. Second method is with DAC, when we are dividing the problem into the subparts and we are going to either left side or right side. Constraint is only applicable on sorted elements. Only applicable on sorted array. This is the constraint with this. Now try to understand that if you are given with an array with the index 1 to n, I to j, then this is the array name. I is starting index of the array. J is the last index of an array. X is representing the required element. Okay. So here, first of all, what we are saying is, if in the array there is only one element, यानी कि starting index or ending index same होगा. So if I is equal to j, that means here we are looking for only one element. एक ही element है, या तो मैच होगा या नहीं होगा, इसमें आपको लूप एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, because we have only one element. So we are looking for if that element is the required element. अगर required element है, we will return the index. If it's not the required element, simply will return -1. -1 means this is a case of unsuccessful search. हमारे पास element नहीं मिला है. Correct? Else means if the problem is large. This is determining the termination condition. This has determined the termination condition. Else means we are going to the recursive part. Yani ki problem size is large. Recursion. If the problem is large, we'll be dividing this from the mid. Compare the element with the middle element. सबसे पहले आपने mid find किया. Mid means first page number, last page number divided by 2, you will get the mid. How much time will it be taking? This will be taking constant time. After that, we are looking that if the required element is available or is it available at the mid. So if a of mid, index के अब यहाँ पे mid, if a of mid is equal to x, तो इसका मतलब हमें element मिल गया and will return the position that is mid. Otherwise,
एल्स अगर एलिमेंट नहीं मिला या तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे या फिर राइट साइड पे जाएंगे। अगर लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो अब यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज होंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स तो सेम है, एंडिंग इंडेक्स सेम है, बट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम हियर द इंडेक्स विल बी, स्टार्टिंग चेंज नहीं हुआ है बट एंडिंग चेंज हो गया, जे की जगह अब मिड पे कहीं पे रुक जाएगा। मिड को ऑलरेडी कंपेयर करवा चुके हैं, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर हमने 1000 लिए, 500 पेज पे जो एलिमेंट्स है उनसे कंपेयर करवा चुके हैं, तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, टिल 499। दैट मीन्स इट इज मिड माइनस 1। If the element required element is smaller than a of mid, middle element से smaller है, then we have to go to the left side, left hand side, and left hand side के parameters के I and mid minus 1. So if and अगर element greater है, x is greater than middle element, then x is greater than the element which is available at the middle position, then we'll be considering the right side of the problem. So we will start looking from 501, that is nothing but mid plus 1. So this is what we are writing here. If it's not matching with the required element, then go to either left side or right side depending on कि required element कौन सी side पे होगा. A of mid is greater than x, यानी कि required element smaller है, so we have to go to left side. लेफ्ट साइड पे सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन नेम इज सेम, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 4 आ रहे हैं, एरे नेम इज सेम। अब स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर द लेफ्ट हैंड साइड एरे इज आई एंड लास्ट इंडेक्स इज मिड माइनस 1। और कौन सा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, एलिमेंट तो सेम ही है, दैट इज वी आर लुकिंग फॉर द एलिमेंट एक्स। अदरवाइज मीन्स मिड के इक्वल एलिमेंट नहीं मिला, ग्रेटर नहीं है, तो अदरवाइज में आपके पास सिर्फ एक ही केस बचता है, दैट इज द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज ग्रेटर देन द मिडल एलिमेंट, सो वी हैव टू गो टू राइट हैंड साइड. So this way every time we'll be selecting left hand side or right hand side of the problem, and we'll keep on discarding half of the elements, and finally at end पे आपके पास एक ही element बचेगा, and then it will be looking if it's the required element or not. Is this clear? So this is how we search for an element using divide and conquer. Using recursion, same function को call करें, so this is recursion. So what will be the time complexity? Or let's write the recurrence relation. For example, n elements were there. If only one element is there, if n is equal to 1, यानी कि प्रॉब्लम में आपके पास एक ही एलिमेंट है, then it is going to take constant time. But if more than one element is there, if n is greater than 1, then either will be going to left hand side or right hand side. आपने देखा है यहाँ पे if else आ रहा है. So binary search, if this is function t and total number of elements are n, then it's also making a call to the function t, but a mid, approximately middle value ले रहे हैं, so this is n by 2. This is also n by 2. Are we considering both the parts of the problem at the same moment? Same time पे, एक ही time पे क्या हम दोनों parts को consider कर रहे हैं? नहीं, we are just considering one part of a problem. So here we can say that either going to left side or right side. दोनों नहीं ले रहे हैं तो sum नहीं करेंगे. So this is n by 2. और यहाँ पे problem को divide करने या solution return करने, that will be represented in the form of f of n. तो problem को divide करने के लिए this is taking constant time. So what will be the time complexity? We are getting the same recurrence relation which we were getting for power of an element. We have already solved it. It will be returning theta of log n. So this is the complexity with binary search. We know that with linear search it's order of n, and with binary search it is log n. Is this clear? तो इसीलिए क्योंकि बाइनरी सर्च के साथ लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, इसीलिए हम कभी भी सॉर्टेड एरे पे लीनियर सर्च अप्लाई नहीं करते, बिकॉज लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग इट विल बी टेकिंग मोर टाइम. इज दिस क्लियर? I guess today we'll end our discussion here.
get comfortable with these basic steps. And tomorrow we'll be talking about two next applications. One will be finding the maximum and the minimum element, and then the next one will be stress matrix multiplication. Okay. तो कल ये वाली दो एप्लीकेशंस खत्म करके परसों से हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक्स स्टार्ट कर देंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेकिंग मर्ज सॉर्ट फॉलोड बाय क्विक सॉर्ट. तो उसके बाद बाकी सॉर्टिंग टेक्निक्स करेंगे. ये दोनों पहले क्यों ले रहे हैं? बिकॉज दीज आर द सॉर्टिंग टेक्निक्स विच आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर. ओके. Anyone having any doubt till this point? So tomorrow we'll continue our discussion with divide and conquer applications. Directly I'll start from the first application, that is uh, finding minimum and maximum element. And next one will be covering is presence matrix multiplication. इस सेशन की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी. जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है. जो लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए, गाइस यू कैन सर्च फॉर शेफाली मैम टेस्ट बुक और लेट मी शेयर माय स्क्रीन. अदरवाइज आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां पे जाके आप लिंक को फॉलो कर लो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल. तो अभी ये सेशन चल रहा है. व्हेन यू विल गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो यहाँ पे आपको काफी सारे लिंक दिखेंगे. पहला लिंक है दिस इज फॉर द मास्टर क्लास जो हमारी 8 PM पे होती है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे को मास्टर क्लास नहीं होती है. सैटरडे संडे इसरो एंड गेट का यूट्यूब सेशन होता है. And if you want to join NISC Super Coaching, you can follow the second link. Here is the third link, जो हम majorly link पे focus कर रहे हैं, that is the Super Coaching Telegram. So you can join this link, join this Telegram group. इसमें आपको सारी PDF मिल जाएंगी. Okay. So if you are interested in joining the super coaching, if you are dedicatedly preparing for the gate और आपको complete course चाहिए structured manner में, proper notes चाहिए, test series, practice questions, everything, then you can join the super coaching batch. In the super coaching batch, you will be learning the concepts and depth from multiple educators. For example, you can learn data structures from multiple educators. So n number of courses are available under super coaching, but these detailed sessions will be in the recorded format. So let me go to the full courses. Here you can see we have a full course by Gate Forum, full course by Digimento, full course by Nimbus Learning, and full course by me and my team. तो ये जो कंप्लीट कोर्सेज हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. यू कैन फॉलो इट. पूरा कोर्स आप देख सकते हो, पूरा करिकुलम आप डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज एज ऑफ नाउ सब्सक्रिप्शन इज नॉट एक्टिवेटेड. ओके. सो एक ही कोर्स फुल कोर्सेज है, मतलब हर सब्जेक्ट हर कोर्स में कवर हुआ होगा. तो इस तरीके से आप वेरियस कोर्सेज से अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हो. वैसे इतने सारे सेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, बट एवरीबॉडी इज हैविंग देयर ओन वे ऑफ टीचिंग. अगर मैं एजुकेटर्स की बात करूं और सिमिलरली स्टूडेंट्स का भी, हर बंदे का अपना समझने का तरीका होता है. तो आपके पास चॉइस अवेलेबल है कि आप किससे पढ़ना चाहते हो, विच इज यूजली नॉट प्रोवाइडेड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. ओके. Apart from that, you can have a look over the profile of the super teachers, demo classes, live series, mock test, study notes मिलेंगे आपको, detail notes and formula notes. Formula notes revision के टाइम पे काम आएंगे, detail notes जब आप concepts को learn कर रहे हो उस टाइम पे काम आएंगे. Engineering mathematics, general aptitude के भी detail notes available है. Computer science engineering में जितने भी हमारे पास technical subjects है वो सारे आएंगे. So 4 more chapters are included, means यहाँ पे 4 और फोल्डर आएंगे. टोटल 10 folders are there and we have those many technical subjects. हर एक फोल्डर के अंदर कितनी PDF होंगी, it depends on the number of topics of that particular subject.
फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास 5 यूनिट है, तो यहाँ पे 5 PDF अवेलेबल है. सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, but for that you must have the activated subscription for Gate Super Coaching. Then only you'll be able to download it. And apart from that, you will be provided with a live series. Live series may will be just having the quick revision sessions, doubt solving sessions, and previous year question sessions. ओके. लाइव सीरीज में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक को कवर करने के लिए 3 सेशंस चाहिए, बट इन द क्विक रिवीजन विल बी कवरिंग दैट इन 1 सेशन. तो सिर्फ क्विक रिवीजन और डिटेल में डिफरेंस कहाँ पे आएगा? विल बी जस्ट विल बी टेकिंग लेस नंबर ऑफ एग्जांपल्स ड्यूरिंग द क्विक रिवीजन. जब हम डिटेल में कॉन्सेप्ट करते हैं तो तब उस टाइम पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और काफी सारी एग्जांपल्स हम कंसिडर करते हैं, इसलिए ज्यादा ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है. Okay, so this is the agenda of the super coaching. So if you are interested in joining that, we have 3 plans available: 1 year plan, 2 year plan, and 3 year plan. 1 year plan 4th year या pass outs के लिए beneficial रहेगा. But if you are in 2nd year or 3rd year of BTech, then I'll recommend you to go for 24 months plan. When you'll be applying the coupon code is given in the description box, that is Shefali S. When you'll be applying this coupon code, you will be getting 2 year subscription at a price of 21,094. Bina subscription ke it's of 62,500. Okay. 2 year सब्सक्रिप्शन. 2nd year से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज जो गेट के कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वही सारे सब्जेक्ट्स है जो आप बीटेक में कवर कर रहे हो. सो दिस विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर द सेमेस्टर एग्जाम्स एज वेल. तो आपका अलग से कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है. मोर ओवर काइंड ऑफ आपको सेमेस्टर एग्जाम्स की भी गाइडेंस मिल जाएगी. कॉन्सेप्चुअली जब आप स्ट्रांग हो गए तो थ्योरी में आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम होती है. मोस्टली स्टूडेंट्स आर लाइक, अगर एल्गोरिथम्स हो रहा है या डेटा स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, देन दे आर लाइक कि प्रोग्राम्स लिखने ना आए, एल्गोरिथम्स या कॉम्प्लेक्सिटीज ना पूछ लो, थ्योरी पूछ लो कि क्या होता है. तो थ्योरी में कहानी लिखनी है वो हम लिख ही देंगे. बट while preparing for the gate, if you have strongly prepared for the concepts, then easily you can handle any type of question in your semester exam. So ultimately that will uh, be helpful in your campus recruitment as well. Okay, so this is about super coaching, gate super coaching. If anyone is having any doubt, you can ask. From my side, this is it. I just wanted to cover these things only. So you can join this Telegram group. Link आपको पता चल गया कहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. अदरवाइज यू कैन सर्च फॉर शेफाली मैम टेस्ट बुक. polls, doubts and discussion, direct interaction, PDF. These are the benefits of joining the Telegram group. और जिन लोगों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, in order to get more videos on the technical concepts of the GATE syllabus, subscribe the channel. And sessions अच्छे लग रहे हैं तो obviously I'll recommend you to like the video as well. Let me quickly share the schedule for this week. Monday to Friday, we'll be having the master classes and YouTube session, YouTube and master class. YouTube session is from 4 p.m. to 5 p.m. and master class is from 8 p.m. to 8:30 p.m. Half an hour. In today's master class, we will be covering PYQs. Master classes में हम लोग PYQs करते हैं और YouTube session में we are learning the concepts. पहले सेम डे जो कॉन्सेप्ट किया उसी के PYQs होते थे, बट ऑन योर डिमांड वी हैव चेंज इट टू द टॉपिक व्हिच वाज कवर्ड इन लाइक 2 days बैक. तो PYQs हम आज वाले सेशन में करेंगे लॉकिंग एंड कंकरेंसी बेस्ड प्रोटोकॉल्स. लॉकिंग दैट इज नथिंग बट कंकरेंसी बेस्ड प्रोटोकॉल्स. तो लॉकिंग एंड टाइम स्टैम्प दोनों आ जाएंगे. So today's session will be based on concurrency based protocols.
So you can revise it. आपके पास approximately it's going to be 5. You have 3 hours. अगर आपने solve नहीं किए concurrency based protocols को एक बार revise कर लो. Questions नहीं कर सकते, at least revise the concepts so that master class में when I'll be giving you a question, you'll be able to solve it. Okay. Saturday and Sunday we are having 2 sessions. Weekend पे सिर्फ ISRO के sessions होते हैं. So both the sessions will be on YouTube. These master classes are also free. So first is for GATE and second session is for ISRO. Session timing is 6 p.m. to 7 p.m. And this is from 9 p.m. to 10 p.m. Okay. So this is all from my side. If you guys have any doubt or query, you can ask. Otherwise, we'll end our discussion here. Anyone having any doubt or query? Although आज वाले session में बिल्कुल मजा नहीं आया because interaction level was 0. When slowly will be increasing the complexity. आज वाली जो दोनों applications थी बहुत simple, बहुत easy applications थी, but I wanted you guys to get comfortable in writing the recurrence relation. अगर आपको पता है कि एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रहे हैं तो आपको रेफरेंस रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एल्गोरिथम्स में जो मेजरली क्वेश्चंस आएंगे वो या तो रेफरेंस रिलेशन बेस्ड होंगे या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. So anyhow, complexities, best case में sometimes we are getting different time complexity, worst case में we are getting different time complexity. So if you are going to cram these complexities, you may get confused. So my suggestion is कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को घुमाकर try to write the recurrence relation and rest you know that how to solve a recurrence relation. आपको पता है recurrence relation कैसे सॉल्व करते हैं तो आप फटाफट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिटर्न कर दोगे, तो रट्टे नहीं मारने. ओके. Okay, Prashant Prabhakar is finally responding. सेशन एंड के टाइम पे तो कोई डाउट नहीं है. Okay, we'll end our discussion. You know the agenda for tomorrow's session also. So please guys be on time. If you want to learn the session, learn the concept in the live session, recorded session आप अपनी convenience के according कभी भी देख सकते हो, उसमें कोई problem ही नहीं. So thank you so much. God bless you. I'll see you at 8 p.m. in today's session, and this will be on PYQs of log and timestamp based protocols. Thank you so much. Thank you for watching the session.